Good morning class, this is class from maths class 10. We have come to a new chapter linear equation in two variables. The one thing I left from the polynomial, the exercise of miscellaneous exercise. Let's see some question of this exercise, then we have again come on the chapter 3rd, that is the linear equation in two variables. So let's see the questions of miscellaneous exercise from polynomial. So and solve all the question in your copy. Okay, so let's see the question. The first question is, find the zero of the quadratic polynomial pqx square plus in brackets pr plus qs into x plus rxy, and verify the relationship between the zeros and coefficient. So first you have to find the zeros of this equation, then verify that the जीरोज एंड कोफिशिएंट. तो बेटा जीरोज एंड कोफिशिएंट के लिए आप वही तो लगाओगे, द सम ऑफ रूट दैट इज माइनस बी बाई ए. तो वेरीफाई करिएगा कि ये सम ऑफ रूट माइनस बी बाई ए तो इक्वल हो रहा है नहीं, एंड मल्टीपल ऑफ रूट आल्सो. नाउ कम टू द क्वेश्चन एंड सॉल्व द. ओके, तो हाउ टू सॉल्व दिस? तो वी आर गोइंग टू सॉल्व फ्रॉम द फैक्टराइजेशन मेथड. So let's see. Okay, this is your equation. The pqx square and pr plus qs plus rs is equal to 0. Now we are going to factorize. बेटा ये ऑलरेडी फैक्टराइज किया है, इसमें बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं दी है. ओके, तो जस्ट ब्रेक द ब्रैक्स. तो ब्रैक्स में क्या करोगे? ओके, जस्ट ब्रेक द ब्रैक्स. तो ऑलरेडी इट इज़ गिवन इन ब्रैकेट्स, सो जस्ट ब्रेक इट. यू आर गेटिंग pqx square plus p. After breaking the brace you are getting this. When you can see here the p and x can be common from this two term. Here q and x can, sorry, here this is the x and x can be, only x can be common from this. So just common p and x, you are getting here q plus, sorry, and qx plus r. Okay, here when I am going to take x as a common, so you are getting here q x plus r. Okay, this is equal to 0. And now you see that qx plus r, here qx plus r both term have common term, so you just take qx plus r as a common. You are getting left px r left, so keep in bracket plus x. Okay, to write down this. So this is your the value of x. So this you are getting two value. So first equating each as a 0, so you are getting qx plus r is equal to 0, also px plus x is equal to 0. Then you are getting x is equal to minus r by q, again x is equal to minus s by p. Okay, this is the value of two zeros. Okay, you are getting first and second. Now you have you can verify that the sum of रूट बेटा क्या हो जाएगा. इधर आपको मस्त फर्स्ट रूट है, दिस कैन बी से अल्फ़ा, दिस विल बी बीटा. तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होगा? दिस इज माइनस आर बाई क्यू प्लस अगेन माइनस एस बाई पी. ओके, दैट कैन बी रिटन एज माइनस पी. ओके, यू कैन मल्टीप्लाई क्रॉस. ओके, या फिर लेट्स सी हाउ टू मल्टीप्लाई. माइनस आर बाई क्यू एंड माइनस एस बाई पी है. तो यूज द क्रॉस प्रोडक्ट मेथड एंड फाइंड द सम. इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आर से पी का एंड एस बाई क्यू, दे मल्टीप्लाई बॉटम डिनोमिनेटर. यू आर गेटिंग माइनस पी आर माइनस क्यू एस अपॉन पी क्यू. ओके, एंड टेक अ माइनस एज ए कॉमन. यू आर गेटिंग माइनस, तो माइनस आर प्लस क्यू एक्स अपॉन पी क्यू. दिस इज द सम ऑफ रूट. Also you can see from here the sum of root can be written as the coefficient of minus b by a. Okay? That is minus b by a. Sum of root can be written as alpha plus beta is equal to minus b by a. So what is minus b? Minus b is the coefficient of x and a is the coefficient of x square. You just see that this is pr plus qs, so minus pr plus qx
upon a, that coefficient of x square, that is pt. Okay, you can see both are equal, hence it is verified that the value of roots are correct. Okay, you can check for another question and solve. So here I give some hints for the solve. If you have problem, then ask your problem. Okay, so let's see the question. The question number second can be solved easily. The find the quadratic polynomial whose zeros are given. बेटा whose zeros are given है तो आपको जस्ट आपको इस वैल्यू को सम ऑफ रूट एंड मल्टीपल ऑफ रूट निकाल के आपको फॉर्मूले में लिख दिया है. फार्मूला को पता है, तो फार्मूला का क्या है, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट इंटू एक्स प्लस एक्स प्रोडक्ट ऑफ रूट. ओके, तो जस्ट फाइंड सम ऑफ रूट, दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा, तो सम ऑफ निकालोगे देन प्रोडक्ट एंड जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ इन दैट ideal equation. Okay, you can similarly solve for this. Let's see the question of fourth. If x plus a is the factor of this term, find the value of a. तो if x plus a is factor of बेटा अगर ये factor होगा तो x इक्वल टू माइनस ए, डैट विल बी सेटिस्फाई दिस इक्वेशन. तो और वो सेटिस्फाई करेगा तो उसकी वैल्यू जीरो आएगी. तो आप पुट द x इक्वल टू माइनस ए इन दिस इक्वेशन एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ a. Okay, let's see how to solve. Here you can see the solution of this question. So write the question, and if x plus is a factor of the above equation, then put the value of x is equal to x plus a is equal to 0. So then x is equal to, you are getting minus a. हाँ, तो put the x value is x is equal to minus a in the this equation and find, then you get the value of a. So just put the value of x. So you can write here this is 2 minus x square, sorry x square, so this is x is equal to minus a, to minus a 2 square, and this is 2a into minus a plus 5a in 5 into minus a plus 10 is equal to 0. Okay, now if minus of a of square, so you are getting a square, 2a square, this plus into minus you get the minus 2, and a into a square, again here the plus into minus minus 5a plus 10 is equal to 0. Here this is 2a square plus a, this is minus में, this can be cancelled out from each other, and now you are getting the value of minus 5a is equal to minus 10. Okay, minus minus can be deducted, then 5a is equal to 10 by 5, that is 2. So you get the value of a is 2. Okay, in this way you can solve this exercise. If you have any problem, then ask your problem. Let's see the chapter, new chapter.